Am I audible? Sir, Yes, sir. Okay, thank you. So, yesterday we had seen the meaning of planning. And as a sequence of that discussion, today we will discuss about planning process in India. How the planning is being implemented. And in planning process, now we have certain set of objectives. These objectives are to be fulfilled within a definite time frame, say 5 years, 1 year, 7 year, anything. So when your time frame is very long, suppose we make a very long term planning, suppose 10 years, 15 years, we accordingly set our objectives. Suppose we say that we should be able to provide the minimum needs of the people within a time frame of 10 years, or we should be able to reduce poverty from the current level to 5% of the population within a period of 15 years or 10 years. So when our time frame, the planning frame is for a long period, 10 years, 15 years, we call it perspective plan. And when our time frame is for a short period of time, suppose 1 year, we call it annual plan. Or we may be a period in between 1 year and 15 year and 10 year. Maybe suppose in India, we are accustomed with 5-year planning. Now in the era of Niti Ayog, we are talking of 7-year and 3-year plans. These discussions are being there. However, so far as our syllabus is concerned, about this Niti Ayog or this 7-year planning or 3-year planning, are they incorporated in our syllabus? In these books, I see these things are not incorporated. We are still discussing those 5-year planning, that planning commission, National Development Council. So these are the background. When we are able to understand these things, we can compare it with the present system when it becomes fully functional. Anyway, so that was about the meaning of planning. Then planning process involves 3 different activities. One is your formulation of planning. You have to formulate the plan, where details are being mentioned. What are the objectives? How you are going to finance those projects? What activities you are going to undertake for realization of those objectives? आम जो लक्ष्यटा आम आखि आगे रखीचे से लक्ष्य को पूरण करने को टाइप एक्टिविटीज आम एडप्ट करूचे से एक्टिविटीज रो फाइनेंसिंग आम केमिति अरेंज करूचे केमिति हाउ डू वी फाइनेंस दोज एक्टिविटीज एंड हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देन सो फर्स्ट वन prior to implementation, that is your formulation of planning. In formulation, all the operational sides, details of the things are mentioned, detail are clearly spelled out. Then that will be implemented by some implementation agency. It may be a government of a ministry or department of the central government, or it may be different departments of the state government, or it may be different local level bodies. Suppose your Panchayat Raj institutions may be implemented at the block level. So there may be different levels of implementation. Then formulation, implementation, the next part is evaluation. Whether we are going on the right track or not. Whether what has been stated as the target, what are the stated targets in the planning, whether we are going to achieve that or not, whether the plans and programs are being properly implemented or not. So that is also important. So these different activities may be undertaken at different levels. So accordingly, we have different concept of central planning, decentralized planning. So all these things we are discussing.
So first, just by way of reference, yesterday someone was asking about Niti Aayog. So I will just, for reference point of view only, because the details are not there in our syllabus. So just for the sake of knowledge, but just for the sake of reference, I will say that this Niti Aayog, or National Institution for Transforming India, which was set up in 1st January 2015, is a policy think tank. It is in the nature of an advisory body. When compared to the Planning Commission had some power to impose something on states. But this Niti Aayog is simply an advisory body, but it includes all the state governments. Previously, it interacts with different state governments. Previously, what was happening, which is there in our planning mechanism that we are going to discuss, we had a planning commission. The planning commission's task was to prepare the blueprint of the plan for the country. It will prepare the plan. And that plan prepared by the planning commission is to be approved by the National Development Council. So National Development Council was a very powerful body. This National Development Council examines the draft proposal by the plan proposals prepared by the Planning Commission. Once it gets the approval of the National Development Council, the plans were being implemented. So the National Development Council, which was the most powerful body, it included all the members of the Planning Commission. So those who were involved in the process of preparation of the plan, they were also a part of the approval process. And apart from them, all the chief ministers of different states were also members of that National Development Council. So each and every state had their representation. And in case of Niti Aayog also, it also deals with different state governments. So only thing is that it is in the nature of advising the government. It will put forth the advices, and Planning Commission, and there is a very little difference between the two. And the main purpose of both the bodies, whether it is Planning Commission or Niti Aayog, the main focus is development of the country. Both were responsible for preparation of different plans which are going to transform the country, which are going to lift the country from a low level of development to a higher level of development. So the purpose is same. There are certain differences in case of their power and their constitution. So there may be certain differences. माने तार कॉन्स्टिट्यूशन केमती थिला, यार कॉन्स्टिट्यूशन केमती अछि, सेठी के मेंबर थिले, केते जण फुल टाइम मेंबर, एठी केते जण फुल टाइम मेंबर, सेठी प्लानिंग कमिशन भितरे तमरो तो प्राइम मिनिस्टर ही थिले, एबे भी तम नीति आयोग रे भी प्राइम मिनिस्टर अछंती चेयरमैन, सेठी भी जणे डेप्यूटी चेयरमैन रहउथिले, एठी भी डेप्यूटी चेयरमैन अछंती. प्लानिंग कमिशन ने किछि फुल टाइम थिले तमरो मेंबर्स, 8 फुल टाइम मेंबर्स थिले. बर्तमान से फुल टाइम मेंबर्स संख्या टिके कमी. एनीवे, बट द मेन पर्पस इज सेम, ओनली लिटिल डिफरेंसेस, कारण विथ द पैसेज ऑफ टाइम sometimes it may be felt necessary to bring about certain changes which are thought to be in the benefit of the nation. So whether something is going to give us the desired objectives, or whether it is going to give us the good result or not, whether it is good or not, that is a value judgment that cannot be said right now. So to pass any judgment about anything, we have to wait, we have to see how does it work, how does it benefit the people. So let it work for some time, then only we will be able to give any comment on that. So for the time being, you have to watch
how these functions, how the development goals are being achieved. So how the planning process is going on. So these things we have to see. Anyway, so these are not, this is the just primary difference between the two. Then we will discuss about those are different types of planet that we see. Then there may be different annual plans. Yesterday, I was also talking that when we have a long-term planning, suppose we are planning for 15 years or 10 years. So when we make a long-term plan, we make certain broad objectives. We put certain broad objectives, broad targets before us to be achieved within a very long period of time. Because that is not possible. Suppose that what we want to achieve, it is not possible to achieve in 1 year, 2 year. But ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉଟା achieve କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, given the nature of the activity itself, ବା nature of change that we want to have. And development is nothing but a process of change. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରୁଛେ, ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ, କାରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସେ ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ, ପ୍ଲାନିଂ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟର୍ମସ ଆସେ, ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି, ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ, ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟର୍ମସ ଆସେ ଯୋଉଟା କି there is very little difference between them. କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୋଟେ up to a certain point of time, economists even were not making any difference between the concept of economic growth and economic development. And for them, economic growth and economic development were synonymous terms. They mean the same thing. But only after the implementation of development projects throughout the world, and how we saw that how a major group of people, they become bypassed by the development process. They are not getting any benefit out of the development projects. Then only we realized that the economic development and economic growth are not the same thing. And in case of growth, मैं काले भी कहूँगी, growth रो definition होची increase in income or output per unit of time. Suppose in case of a nation, if your national income increases every year, so we have economic growth. But in case of development, our focus is who is going to get the benefit of that development, that growth. Suppose our national income increases twofold. So who is going to get the benefit of that growth in income? Whether it is equitably distributed or all are equitably getting the benefit, or only a minority sections of the country they get the benefit, and vast majority of the people, they do not get any benefit. They remain outside the umbrella of development. So there is economic exclusion or all are included. We are having an inclusive type of growth. So that is the question. And actually up to 70s, 80s, throughout the world, different countries with the economic planning start ହେଇଥିଲା, they all were trying to develop their country. They all were trying to transform their country in their own way. And that was a period which marked, even today, we find that each and every country, they are trying to compete with each other. So far as your development, achievement of development is concerned, every country trying to surpass the other country, so far as the growth is concerned. So growth is a unidimensional thing where your national income increases or total output in a country increases. But development is more concerned about the distribution of the benefit. So it is more about social justice. Whether there is income inequality or inequality at the level of wealth available with the people. So wealth distribution and income aspect. If there is wide inequality, which is socially socially unacceptable. So that type of unacceptable limit re jodi inequality rahuchi, tale we are actually not a developed nation. We have to work hard to distribute, to ensure social justice. Social justice is equitable distribution.
equal availability of opportunities to all. When we will be able to provide more or less equal opportunities to all for their development, for attainment of a minimum socially acceptable minimum standard of living, then only we can say we are marching towards development, we are going to achieve development. So development is a more broader concept, it's a dynamic concept, it directly deals with the way we live, the way we consume our goods, the way we able different we have the access to different social services or economic services. So these things define our standard of living and tell us whether we are achieving development or not. So 5-year plan, annual plan. Then there is the mention of budget. Budget is an important document of your fiscal policy. In case of budget, what is there in budget? It is just gives us the proposed items of expenditure and different sources of income. What are the different sources of income available to us, and what are the different proposed item of expenditure? So what we are going to do in coming financial year. And actually budget implement हुए केते गोटे फाइनेंशियल ईयर पूर्व हुए ना, तेणु इट इज फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. तेणु नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रे व्हाट आर द डिफरेंट proposed items of expenditure and what is the estimated income for available for the country. तेणु गोटे estimated income and proposed expenditure गोटे financial statement is our budget. So that is also a type of annual budget. And there also we have different priorities. There we allocate resources for different activities. So it is a kind of annual budget. And actually the annual budget by any other policy document which is, suppose this is, we are talking about your budget, the budget cannot deviate from the long-term goals that we have for our nation. आम गोटे 15 वर्ष धर गोटे ऑब्जेक्टिव फिक्स करछे फॉर आवर कंट्री. गोटे एनुअल बजेट केबे भी से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव टू डेविएट हबनी. इट इज इन लाइन विथ दैट प्रोसेस. तेणु काली आमे जो कथा डिस्कशन करथुले जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग टाकू, दैट लॉन्ग टर्म पीरियड कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ शॉर्ट पीरियड्स. तेणु व्हाट वी डू इन शॉर्ट पीरियड हैज एन इंपैक्ट ऑन द लॉन्ग पीरियड. Then long period, I mean, short period, we do something which goes against the achievement of the long-term goal. So in that case, we are contradicting. Amme jo step ta that step is self-defeating. We are not. So actually, in a rational society, in the era of economic planning, that is not there. Sometimes there may be certain deviations willingly due to some peculiar situations. So gote bartan coronavirus type of situation asichi, there is the necessity of diverting huge amount of resources for vaccination and other programs. So these are short term problems. Tenu e jo annual budget re kon hue, we also take care of the short term immediate needs which are the emergencies of that period. In the overall, it never goes against your long-term planning. You know, these are helpful. So they form a part, a dynamic part of that perspective planning. कारण गोटे जिनसटा गोटे वर्ष रे कि 2 वर्ष रे अचीव करी हबो नाही बोली आमे गोटे लॉन्ग टर्म प्लानिंग आम आगे रखिचे 15 वर्ष 20 वर्ष आम प्लानिंग टा करिचे. किंतु सेही 15 20 वर्षटा पीरियड टा ता भितरे वर्षिकिया 1 ईयर के ता 15 टा 1 ईयर टा रहउची कि 20 टा 1 ईयर रहउची ना. तेणु जो 15 1 इयर्स बा 21 इयर्स भीतर आमे जो स्टेप्स नउचे व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली सेटा कोन करा जे से हमरो जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थाए ताकू ही आखि आगे रखी कि आमे तको रखू हैला. We maintain that. Then different plan schemes are there. We will discuss about different plan schemes. हमें जानी चाहिए in India because of to avoid a conflict between center and state so far as your legislative power is concerned.
for legislative division of legislative power between center and state, we have enough provision in our constitution. In constitution, in 7th schedule, we have different lists. We have the union list, we have the state list, we have also the concurrent list. And different subjects have been distributed so that each government will have its own power of legislation. Legislation means who is going to make a law. That is the legislative power. Legislative power is law-making power. So, when the central government, there are certain subjects where the central government is competent enough to make a law. And there are certain subjects where the different state governments, they are competent enough to make a law. And some subjects are there which are divided between center and state. Both center and state can make law. So we have in central list, originally there were 97 items, and in state list we had 59 items. Originally there was 66, now 59 items are there. In concurrent list, some 52 items are there. So actually defense, foreign affairs, these highways, these are the things covered in central list. In state list, we have public order, police, local government, agriculture. These are the things that are covered in state list. Then in concurrent list also we have different subjects like criminal procedure, criminal law, stamp duty. So you can get an elaborate list of items. So where they make their own laws. So this gives the distribution of legislative power among different layers of government, and they make their laws. So what happens in case of union list? When union government makes a certain provisions or certain things, want to develop certain aspects, when union government makes a planning, it is generally covered in central schemes or centrally sponsored. There are three types of schemes. One is your central scheme, second one is your centrally sponsored scheme, and third one is your state sector scheme. In case of central scheme, what happens? Government of India prepares the laws, prepares the plan, and these plans are fully formulated and implemented by central government. এই যে দুইটা জিনিস আমি কইবা, who formulates the plan on that subject? Suppose গোটে ডিফেন্স আমি দেখিলে যে ইউনিয়ন লিস্ট রে ডিফেন্স ইজ এ সাবজেক্ট. So on defense, there may be the necessity of planning for development of the defense of the country. कारण कंट्री डिफेन्स को भी हमको स्ट्रॉन्ग करिवार अछि, ता पई फंड्स एलोकेट करिवार अछि, तार डेवलपमेंट पई हम जेतले किछि प्लानिंग करूचे. So it is the central government which is competent enough to make law on that or make any planning about that and allocate resources. Teno the different subjects which are in union list, se khetra re central government hochenti competent enough to formulate a plan and to implement also. Different agencies, कारण plan to actually implement हुए through different ministries. Planning Commission prepares the plan and different ministries and departments of the government, they implement the plan. Suppose the Ministry of Rural Development, rural development related schemes and plans it will be implemented through rural development. So the education related plan that will be implemented through human resource development and education department. Different state education departments, through education departments. Health related plan through healthcare department, medical health department, that will be implemented. So there are the different implementation mechanisms. Then we have the state list, centrally sponsored scheme. Centrally sponsored scheme it is formulated by the union government, formulated by the center, but implemented by the state. So when
central government prepares a plan and prepares a scheme to be implemented, and that scheme gets implemented by the state. So there may arose the necessity of finances for the state, and their state concerned may not have adequate financial resources to implement that plan, by implement that scheme, that project. So for implementation of that project, center may provide financial assistance to the states. So maybe wholly he pare 100% centrally funded scheme he pare. We have different 100% centrally funded schemes. We have 70-80% fund be pare, 50 he pare. So that depends upon the policy of the government. You know how much. So man is there is a cooperation of both central government and state government. Central government provides some part of the financial resources. State governments also provide certain part of financial resources. So they jointly implement it. So in case of ame dekhiba jetole central scheme ro total plan volume of the plan kete hobo, how much they spend, because actually these plans are completely implemented by the central government. So our jo expenditure side ta, that is undertaken by central government. So the total amount of expenditure is your size of your central schemes. In the centrally sponsored scheme re kon hue na tomar both are partners. Central government is a partner, state government is a partner. Central government kichi kharcho koruchi, state government bhi kichi kharcho koruchi. They have their share. So both misile that will be the size of your centrally sponsored schemes. A state sector scheme re kon hochi the plan sei jo subject guda rahila tar development pai whatever plans and planning and policies are being made, they are completely formulated by the state. They are also implemented by the state. So entire financial responsibility by expenditure, it is the responsibility of the state government. Therefore, whatever is spent by the state government, that is your size of your central state scheme. State sector scheme भी तक हमें पहुँचे. तो main part होची हमारा funding and implementation part. Then for plan assistance, आमे जो रोहिला हमारा plan assistance को था कोटे ऐसी हो, जोड़ा का तो हमारा थोड़ा centrally how much resources are to be transferred from the center to the state. So regarding to take a decision on that, there was the apex body was National Development Council. So in National Development Council, which is the highest powerful body that used to decide how much of resources are to be transferred to the state. So actually, the quantum of transfer depends used to depend on the actual requirement of the state. And all whenever we talk of the different states of India, they do not give us a homogeneous group. We don't have a homogeneous group of equally developed states. There are more developed states. There are also very underdeveloped states. Suppose you talk of your northeastern states. They need more developmental finance. They need more assistance from the Center for Development. And there are also more developed states with minimum support. They can have their own development projects. You know, on what basis and these resources are to be transferred? What is the quantum of assistance that is going to be given to a particular state? So for that, we had the Gadgil formula. So that was a composite formula that was on the basis of your per capita income of that state, or on the basis of your per capita income below the national, how much there is, what is the gap between the particular per capita income of that state and national average. Ako bhitere gap kete hochi. Teno kete quantum tar dorkar, kete assistance dorkar to develop the state. Simte ତାଙ୍କର actual ଥିଲା ତମର tax efforts କେତେ ଅଛି ହେଲା, ତାଙ୍କର
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ନିଡ୍ସ କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍, ତାଙ୍କର ଟैक्स रिफॉर्म, व्हाट इज द गवर्नमेंट, व्हाट दैट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट इज डूइंग टू जनरेट रिसोर्सेस टू डेवलप ऑन इट्स ओन। तेणु ताकर एई सब विभिन्न एस्पेक्ट को आखि आगे रखिकरी गोटे कंपोजिट फॉर्मूला से माने डेवलप करथिले। सेही फॉर्मूला बेसिस रे देयर वाज ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस। सेतपा हमें बहुत समय रे सुनु डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स माने से माने दाबी करंती मोर क्वांटम ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट। हमको डिक्लेयर कर दिया जो यही कैटेगरी रो स्टेट सो दैट वी विल गेट less more of resources from the center. So there is a demand from different states for that purpose. So that was say ei jo policy guda ko seta that is subject to change, maybe future tar change bhi pare, any other formula may be developed. Karan ei jo developmental thing eta was a dynamic concept. What was there in 35 years ago ki 40 years ago সেটা যে বর্তমান কন্টিনিউ করিব সেটি কিছু নাই। উইথ প্যাসেজ অফ টাইম দেয়ার মে বি চেঞ্জেস উইথ দ রিকোয়ারমেন্ট, মে বি গোটা पर्टिकुलर स्टेट से जो लेवल ऑफ जो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट रे थिला 20-25 इयर्स एगो मे बी दैट इज नॉट इन दैट स्टेट एट पर्टिकुलर स्टेट ए पर्टिकुलर टाइम। तो तार डेवलपमेंट बा तार क्वांटम ऑफ असिस्टेंस में भी तार रिक्वायरमेंट में भी डिफरेंट। तापरे जो डिफरेंट एस्पेक्ट तापर आ गोटे हो तमर यूटिलाइजेशन जो सेंट्रल स्कीम जो सेंट्रल फंड ट्रांसफर होची सेटा हाउ इफेक्टिवली सिटी जो डिफरेंट स्कीम्स हमें होचे केते इफेक्टिवली से स्टेट तक इंप्लीमेंट करूची दैट आल्सो तार एफिशिएंसी आल्सो मैटर्स केते एफिशिएंटली से स्कीम उडा के इंप्लीमेंट करा होची हैला। तेणु आम प्लानिंग कमिशन ने गोटे अच्छी से जो प्लानिंग कमिशन और टेक्निकल बॉडी तार जो फंक्शंस गुड़ाक देती मन रखा कारण वी मे एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन अबाउट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द प्लानिंग कमिशन। प्लानिंग कमिशन देला टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री। कारण काली आम जो प्लानिंग रो मीनिंग आम डिस्कशन करूले खाली जो ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फिक्स करदेले हेबनी, जो ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स आम आखि आगे रखुचे ताकू रियलाइज करिया पई ताकू अटेंड करिया पई जो डिफरेंट स्कीम्स आम नौचे डिफरेंट स्कीम्स आम इंप्लीमेंट करिया को जाउचे से स्कीम पई जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस दरकार से रिसोर्सेस आसीबो को ता पई जो ह्यूमन रिसोर्सेस दरकार खाली जे फाइनेंशियल रिसोर्सेस हबनी बहुत समय दरकार। हम सपोज गोटे पर्टिकुलर स्कीम पई वी नीड टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन आल्सो। सपोज वी आर टॉकिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तेणु सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स दरकार अच्छी तेणु तार ह्यूमन रिसोर्सेस केते मटेरियल ये सब केते हाउ मच वी हैव एट प्रेजेंट आम गोटे आसेस केमती करबा गोटे रिसोर्सेस अवेलेबल रिसोर्सेस को आम केमती आसेस करबा ना आम पाखरे एबे केते अछि हाउ मच रिसोर्सेस वी डू हैव एट प्रेजेंट एंड if our requirement is more than that what are the different sources from where we can get, whether आम बैंक लोन करबा कि आमर इंटरनेशनल एजेंसी पाखु आनिबा कि आमर अदर कंट्री जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस आनिबा डिफरेंट सोर्सेस में भी देयर बे बा आम लोन भी करबा। सो डिफरेंट गवर्नमेंट हैव डिफरेंट सोर्सेस ऑफ आल्सो बोरोइंग डिफरेंट सोर्स रो बोरो करि पारे गवर्नमेंट। तेणु व्हाट आर पॉसिबल फॉर अस आमे जे खाली गवर्नमेंट आमे लोन कर देले समस्त हमको लोन देबे सेमिति किछि गारंटी भी नाही। तेणु फ्रॉम वेयर वी कैन गेट रिसोर्सेस जदि भी आमे लोन कले हमको समस्त लोन देले तार रीपेमेंट पुनी तार रीपेमेंट लायबिलिटी आसीबो कि ना इन फ्यूचर वी विल हैव टू रीपे प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। तेणु जो रीपेमेंट लायबिलिटी दैट विल बी ऑन द फ्यूचर जनरेशन। यदि वेरी लॉन्ग टर्म रो कथा आसुची ताले प्रेजेंट जनरेशन मे बी गेटिंग द बेनिफिट but future generation will have to repay the loan and interest, the principal and the interest. So all these things are to be taken into account. So ता भितर आमे देखिबा जे different viable sources कोडा को अछि from where we can get. तेणु प्लानिंग कमिशन न काम होला to assess the resources, make an assessment, then formulate the plan, then to determine the priorities आम जो कोजे different priorities भितरे कोडा को आमे we will give more importance कारण इकोनॉमिक्स रे हम काली कहतले जे हमको प्लानिंग क्षेत्र रे we have to make a deliberate choice मे बी आम पाखरे जति रिसोर्सेस अछि that is not adequate enough आम पाखरे 10 15 20 इम अनलिमिटेड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स थाई पारे। So we have to choose how which one are the most important ones which are to be given
top priority at present, which can be postponed to the future. Then we have to make a rational choice among the objectives also. So that is prioritization by giving priority. Then you indicate the factors which tend to retard. We have then also apart from that, खाली जो हमें planning करिवा, financial resources हमें जोगाड़ करिवा to be implemented, to be utilized in the implementation. ता कथा नुहे हमको भी identify करिवा रही जे खाली गुटे development हमें कहीं कि why we are underdeveloped. There are certain factors also which retard development, which are an obstacle on the path of achievement of development. तेणु आमर जो weaknesses, आमर जो lacunas, आमर जो problems, जो obstacles गुड़ाक अच्छी ताकू मध्य हमको आइडेंटिफाई करिवार अछि एवं तार इराडिकेशन पय हमको भी काम करिवार अछि सेगुडा को जदी इराडिकेट हम प्रॉपर्ली करि परिबा ताले आमे जो पॉजिटिव स्टेप्स नउचे फॉर implementation of the program, that will be more successful. आमे अधिक हायर रेट रे अचीव करि परिबा तार जो डेवलपमेंट गोल्स गुड़ाक हैना. तेणु these are there in page 27 ताको हम टिके बोली कि देखिबा. Then National Development Council कथा हमें कहउथिले सेटा National Development Council जिम the highest policy making body. Then machinery state level, the state level planning पय we have different state planning bodies जो अछि, district level district planning agencies जो अछंती. तेणु हमर जो कथा पडिथिला सेतले centralized plan and decentralized plan. Centralized plan ने कोन हुए, the planning is done at the top. And we have different layers of government. Actually, at the top we have central government at the center. Then we have different state governments. Then ताठु तळ level को जदि जिबा, we have district level administration. सेतिरे कोन होची district level administration जदियो state government रो गोटे part, किन ता भितरे हमर सब different local self governments रहउचंती. हमरो municipal corporations, municipalities, notified area councils रहुची, urban local bodies, सेमिति primary क्षेत्र रे तमरो primary institutions सब रहउचंती, ग्राम पंचायत etc. they are there. So at different levels we have different levels of government: central government, state government, then we have local self government. You know, when some plans are made, they are implemented at different stages also. किछि प्लान अछि जेमिति कहली सेंट्रल स्कीम उडाको सेटाको सेंट्रल स्कीम रो इंप्लीमेंट होछि, प्रिपेयर्ड एंड इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द सेंटर. देन स्टेट लेवल लो भी इंप्लीमेंट होछि, देन लोकल लेवल ले भी हमरो प्लान से इंप्लीमेंट होछि. डिफरेंट थ्रू पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस वी आर इंप्लीमेंटिंग द प्लान. तेणु एई उडाको होछि डिफरेंट स्टेजेस. एटाको जदि हमें प्लानिंग टा को कोन करछे ना, हमें information and resources we plan from the center, we transfer the resources and information to the lower level. So that is your central planning. You know, the policy making is centralized. At the lower level, they do not have any freedom to make any policy. They do not have any freedom to make any choice. So when that type of thing is there, we have centralized plan. किंतु आमे खाली इनफॉरमेशन एंड रिसोर्सेस आमे ट्रांसफर कर दवा लोअर लेवल को हायर लेवल लो, तांको गोटे ब्रॉड गाइडलाइंस आमे प्रोवाइड कले, किंतु लोकल लेवल ले वी प्रिपेयर प्लान्स, वी मेक आवर ओन प्रायोरिटीज. एक्चुअली व्हाट डू वी नीड फॉर अस, व्हाट पर्टिकुलर एक्टिविटीज आर टू बी अंडरटेकन इन ए पर्टिकुलर एरिया. एई टाइप रो जदी गोटे कंक्रीट डिसीजन मेकिंग ता हमको ब्रॉड गाइडलाइंस विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द टॉप, बट एक्चुअल choice, actual decision making, taking into account the local needs, local aspirations of the people and local resources. एई टाइप रो चॉइस टा जदी छाड़ दिया जाए कोटी के हमरो लोअर लेवल को, so we will have decentralized planning. So planning at different levels. तेणु मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल, मेसो लेवल, एमती डिफरेंट लेवल्स रो कथा आछी. मैक्रो लेवल माने दैट इज नेशनल प्लानिंग फ्रॉम द टॉप. In the micro level, lower level, local self-government level, different district level planning, block development, community development blocks कथा आछी, community development block जोटा ब्लॉक गुडा को हम जनरली सेटा को community development block कहते. एक्चुअली ता टर्म टा होची community development block. किंतु वर्तमान आमे से community development block कथा बहुत भूली जाय छी, केई तको कहूने एक्चुअली ब्लॉक बोली आमे कहि दोचे, किंतु एक्चुअली तार टर्म टा होची community development block. जाबियो तेणु ब्लॉक लेवल ले भी प्लानिंग होची,
ताठू लोअर लेवल ले पंचायत लेवल ले प्लानिंग होची विलेज लेवल ले प्लानिंग होची एमती डिफरेंट लेवल ले आसुची लोअर लेवल उडा कले माइक्रो लेवल प्लानिंग आ स्टेट लेवल प्लानिंग टाको मेसो लेवल प्लानिंग बोली कहउछ आ तो गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर कथा आसे जो माने हुए तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रो से माने पढ़ी थिबे इंफ्रास्ट्रक्चर गोटे बेसिक सर्विसेस आम बहुत समय आम गोटे क्लासरूम रे आम पिलांकर फीलिंग आसे बहुत समय से माने इंफ्रास्ट्रक्चर टाको कंफ्यूज करन व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर तेणु इंफ्रास्ट्रक्चर आमर कंफ्यूज करिवार किछि नाही I do suppose that you know the meaning but let me also tell you somebody some may not be some किछि हुए तो ता भितर क्लियर नथिबा हमें तेणु आम इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंग टाको देखिबा दीज आर द बेसिक सर्विसेस विदाउट व्हिच द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन तेणु आम जो टोटल इकोनॉमी टाको आम डिफरेंट एक्टिविटी सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स वी आर डिवाइडिंग तेणु एक्टिविटी सेक्टर्स भितर आम एग्रीकल्चर रोचे इंडस्ट्री रोचे माइनिंग क्वेरिंग तेणु आम डिफरेंट कौन कर तीन बेसिक ब्रोड सेक्टर आम भाग कर दौचे प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर भितर आम इनक्लूड करुचे को एक्टिविटीज गुड़ा व्हेयर नेचर प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल गोटे प्रकृतिर भितर गोटे रोचे सब एग्रीकल्चर माइनिंग एंड क्वेरिंग से नेचर प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल सो दीज आर द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज secondary sector activities भितर आमर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर देयर एंड सर्विसेज सेक्टर होची सपोर्ट एक्टिविटी माने आमर हेल्थ केयर फैसिलिटीज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आमर एजुकेशन सो दीज कम अंडर योर सर्विसेज सेक्टर एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर होची सेही बेसिक सर्विसेज गुडा जहाँ विदाउट व्हिच द activities in primary sector secondary sector and tertiary sector cannot be undertaken तेणु इंडस्ट्री गोटे भल रास्ता घाट दरकार कारण रास्ता दरकार टू ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम माइन्स टू द इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम इंडस्ट्रीज वी हैव टू ट्रांसपोर्ट द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू द मार्केट रे पहुंचेबार अछि इंडस्ट्री पाखरे रॉ मटेरियल पहुंचेबार अछि इंडस्ट्री जो फाइनल गुड्स प्रोडक्शन कला ताकू नै कि मार्केट रे पहुंचेबार अछि तेणु ता पई तार भल गोटे रोड दरकार रोड कम्युनिकेशन रेलवे कम्युनिकेशन आमर दरकार सेमिति ट्रांसपोर्टेशन दरकार ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज सेमिति आमर इलेक्ट्रिसिटी दरकार हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड वर्कर्स दरकार तेणु एजुकेशन कहबा हेल्थ कहबा रोड ट्रांसपोर्ट कहबा सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कहबा दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर्स अच्छा ये हला हमर यूनिट 2 रे पाखा पाखी पाठटा रहउची देन तार मल्टी लेवल प्लानिंग रो कथा आसुची अच्छा वर्तमान पर्यंत आमे जेतिके डिस्कशन करले डू यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज और यू वांट टू participate in discussion or any one of you want to supplement something Jagdish, do you hear me? Yes sir. Do you want to supplement something? आमे जेतिके डिस्कशन करले पर्यंत बुझिबारे किछ असुविधा होची कि ना सर बुझिया में किछ प्रॉब्लम नहीं बट if you don't mind sir are you comfortable तो please video because मतलब होची जे आपण जदी कंफर्टेबल अछन ताहले आपण वीडियो कॉन्फ्रेंस करी रे कोहन तो समस्त बुझिया पे कंफर्टेबल लागिबो ओहो एक्चुअली सॉरी बड़ा जो वीडियोटा ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केमती करे माने तमे वीडियो ऑन करिवो मु वीडियो ऑन करले हमें डिस्कशन करबा नै आपण सेडा माइक जोडा कि माउथ रहउची माइक ऑफ करछनी वीडियो पे ऑफ करछनी जदी आपण वीडियो पर क्लिक करिवे देन सेडा वीडियो आसीले माने डिस्क्राइब करछनी जहा कि आपनकर माने आपन को देखि जहा भी किछि बुझिवाडा बहुत जिनिस इजी हबो अच्छा 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 ठीक 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 ओनली फॉर जदी ऑडियो देबे ऑडियो ऊपर माने मतलब कोन होची जे जदी जोडा ऑडियो आसीला तो क्लैरिफाई होउछ ठीक है सर किंतु आपण जदी वीडियो ठीक ठीक थैंक यू फॉर योर कंस्ट्रक्टिव सजेशन इट्स अ वेरी गुड थिंग पॉजिटिव थिंग यू शुड हैव पॉइंटेड इट आउट अर्लियर आउट आगुरु कहिथिले होय तो बेटर रहितांदा मु काली ठो भी हम काली आपण नोरे क्लास कोले तो कोन कहिबे कि न बेले से मोटिवेट कंफ्यूज नहीं 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 एक्चुअली आई एम आल्सो वेरी स्पोर्टिव कारण तुम मानकर फीडबैक न नले मु केमती करिवे हला सो आई नीड योर फीडबैक मोर दरकार
So now, do you see me? Yes, sir. Okay, thank you, sir. अच्छा अच्छा ना ना एटा मु ताको मार्क करनी का आमे जतले क्लास करछु सब बोले एटा को तो ऑन करूनु जतले दरकार पड़े आमे ऑन करू हम जतो राइटिंग थाए खाता पत्र कसिया को पड़े हमर जूम मीटिंग रे क्लास नेला वाले कोन हम खाता रे गुडा ए जो स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स कसिला वाले दरकार पड़े हम ऑन करी कि सेटा खाता रे कसी कि देखो ठीक अछि होउछन्दी तो से हमें भी पॉइंट करूछु ठीक अछि तथापि आपण वीडियो जदी जहा डिस्क्राइब करछथि माने हैंड टू हैंड पॉइंट जहा नहीं माउंट आज हाँ ठीक अच्छे आई वेलकम योर सजेशन जदि एटा मतलब क्लास आरंभ रु पॉइंट आउट कर दी था आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी है ना ठीक अच्छे थैंक यू वेरी मच आई एक्सेप्ट योर सजेशन थैंक यू वेरी मच अच्छा anybody else who want to supplement something Sandeep Patnaik, do you hear me? Yes, sir. Acha, would you like to supplement something? आमे जो डिस्कशन कले कोन रहउ असुविधा को रहउ बुझिबारे कोन प्रॉब्लम होउची ना सर मुझे कुछ प्रॉब्लम होन ठीक ठाक सब अच्छा ठीक ठाक अछि तो ठीक अछि मछिरा आमे दुई तीन जन को एमती फीडबैक नबा जेमिति आज जगदीश गुटे जिंस पॉइंट आउट कला आई एम वेरी मच हैप्पी सेमिति जतले एनीथिंग यू फील कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम कारण आमे तो इंटरैक्टिव क्लास रे रहउचे आमे वी विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर हला आमे कोठी गुटे कार प्रॉब्लम आमे देखुचे गुटे आउ हाउ इट कैन बी मोर बेटर हला जदी my presentation can be more better by adding something so I will gladly accept that सेमि तमर जदी किछि असुविधा अछि मु देखुची I will also point out so that we both will benefit the learners and the counselor both should get benefit out of this interaction so positive constructions are always welcome and also Good जदी evening, केतले sir. problem yes सर टिके प्रोबेबल क्वेश्चंस ओडा ऐड कर देले बेटर टिके हबो सर हाँ हाँ दैट वी विल डिस्कस आमे प्रथमे देखियो हमर जोटा अछि व्हाट इज देयर वी आर टू डिस्कस हाँ हाँ Sir, I want to ask a little bit of doubt. Sir, actually, previously discussed about primary sector, manufacturing sector, secondary sector, and tertiary sector. But नहीं in नहीं development प्राइमरी sector, we are सेक्टर हाँ हाँ sir, primary sector, secondary sector, and tertiary sector, right, sir? हाँ Sir, but in development sector, we are more focused about primary sector and tertiary sectors. How can we product something, and after later that, how can we market our semi-finished good and finished goods? Right, sir? नहीं which sector has more development potential that is also important which Yes, will sir. be more beneficial which will be more productive in a particular area and agriculture the importance of agriculture cannot be ignored agriculture is Yes, the sir. important act Because sir, our agri and we are included it in agri and economic. Mostly primary sector dependency is more than 60%. So that agriculture is more important in India. So Am I right, sir? primary sector activities will be there, but we Yes, should sir. not forget also the interlinkage effect between industry and agriculture. Yes, sir. And development of one also leads to the development of the other. And आमर गुडा इंडस्ट्री भितर गुडा रहुची एग्रो इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तेणु एग्रो इंडस्ट्रीज रा रॉ मटेरियल कोठु पाइबो धर आमर चीनी शिल्प कि आमे जो They फूड depend प्रोसेसिंग on इंडस्ट्रीज दे डिपेंड ऑन they depend on एग्रीकल्चर primary sector. Yeah, depend on तेणु प्राइमरी agriculture. सेक्टर डेभलप हेले सेटा ही डेभलप हबो तापर आउ गुटे जो लिंकेज इफेक्ट रे आउ गुटे जिंस रहउची मार्केट सपोर्ट हम खाली इंडस्ट्री जे गुड्स प्रोडक्शन कर दै जिबा हेले तो केवल इंडस्ट्री जे जो लोक माने काम करछन्ती दे विल गेट एन इनकम आ सेही माने ही केवल ताकर इनकम टाको खर्च करिवे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऊपर तेणु इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को देश सारा समस्ते पुणी परचेज करले जे किसी ना इंडस्ट्री टाको आमे सपोर्ट करि परिबा आ जदी गुटे इंडस्ट्री रो आउटपुट टा जदी बिक्री न हबो ताले से इंडस्ट्री तो ऑटोमेटिकली बंद हो
ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ Sir, ହାତରେ ବି that's a ଇନକମ୍ ରହିବା ଦରକାର ନା, ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ପାୱାର ସୁଡ୍ ବି ଦେୟାର। ତେଣୁ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ପାୱାରଟା ଯଦି ଅଦର ସେକ୍ଟର ଗୁଡାକ ଡେଭଲପ ନ କରୁଛି, ସର୍ଭିସେସ୍ ସେକ୍ଟର କି ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଯଦି ସେଗୁଡାକ ବି ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଡେଭଲପ କରୁନି, ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡାକୁ ମାର୍କେଟ ସପୋର୍ଟ ଦବ କିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ କୁ? ତାପରେ ଗୁଡାଏ ତମର ଆଗ୍ରୋ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ରହୁଛି, ଦେ ଆର ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଫର ଦ ଏଗ୍ରିକଲଚର FPOs, ସେକ୍ଟର sir. ଅଲସୋ। Mostly agri-based industries are mostly called as FPOs, farmer producing organizations. କିନ୍ତୁ ultimately Sir, we need a balanced development of all the sectors, that we should not forget। କାରଣ ଖାଲି only through industries ଗୋଟେ over a period of 100 years କେବଳ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟାକୁ ଡେଭଲପ କରିବା, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡେଭଲପ କରିବାନି। So that side of one-sided development is not the development at all। And development ର ultimate objective ହେଉଛି all the activity sectors should develop simultaneously। କିନ୍ତୁ at a time it is not possible to develop all the sectors। So what we do, we give emphasis on a particular sector so that it will develop at a shorter period of time and will contribute to the development of the other sector। କାରଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛେ, ଆମର ମେନ୍ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ଆମେ ଦେଖୁ କଣ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ରେ ଲ ଅଫ ଡିମିନିସିଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ଆର୍ ଦେୟାର। ତେଣୁ yes, sir. Yes, sir. ତା ଅପେକ୍ଷା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡିମିନିସିଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ଟା କମ୍ ସେଟ୍ ଲେଟର ଷ୍ଟେଜ। ତେଣୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପୋଟେନସିଆଲଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ଅଧିକା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଧିକା ହେଲେ, ୱାନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ ଡେଭଲପ, ଦେ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ an impetus for development, but they will provide for the development of a primary sector। Suppose industry जो माने engaged अछंती, they will spend their income products of primary sector, ताकि they need food items, they need other items which they will consume in your day to day life, they need vegetables, they need rice, they need wheat। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, there will be incentive for development of agricultural sector। କାରଣ ये सब एक्टिविटीज गुड़ाक कौन हुए, दे आर डिमांड बेस्ड। यदि मोर प्रोडक्ट पे देयर इज ए डिमांड इन द मार्केट, दैट प्रोमिसेस हायर प्रॉफिट फॉर मी, सो आई विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर सो दैट आई कैन सेल मोर इन द मार्केट एंड गेट मोर प्रॉफिट। तेणु ताको सपोर्ट करिवार अछि। एंड अल्टीमेटली कोन हबो ना, इंडस्ट्री डेवलप कला से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पय हमको प्रोवाइड करिवो एनफ इंसेंटिव। तेणु एग्रीकल्चर डेवलप करिवो लेटर स्टेज रे सपोज, किंतु गोटे स्टेज आसीबो व्हेन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर दे हैव ए बैलेंस्ड स्टेट ऑफ ग्रोथ। तेणु सेही टाइप रो बैलेंस जे पर्यंत न आसीची, देयर इज मच टू बी डन। तेणु ऑल एक्टिविटीज आर इंपोर्टेंट। खाली जिमिति हमर गोटे इंग्लिश रे अछि सेइंग्स जे मैन डजंट लिव बाय ब्रेड अलोन। तेणु गोटे पर्टिकुलर टाइप रो गुड्स रे हमर दैट इज नॉट सफिशिएंट एनफ फॉर अस, बुझियले। तेणु तापर हमर मल्टी लेवल प्लानिंग रो कथा आछि। मल्टी लेवल प्लानिंग कथा हम टिके आगु देखथले, जोटा सेंट्रल लेवल प्लानिंग, स्टेट लेवल प्लानिंग, प्लानिंग एट द लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल कि हमर पंचायत लेवल, विलेज लेवल, एगुडा का हमर मल्टी लेवल प्लानिंग। तापर एथिरे तापर ये जो प्लानिंग रे गोटे कांसेप्ट अछि, जो डिफरेंट हमरा आछि एलिमेंट्स कंपोनेंट्स कथा। सेठी होछि आमे सबोले कोन हुए ना, गोटे प्लानिंग रे इकोनॉमिक कंपोनेंट थाए, गोटे सोशल कंपोनेंट थाए। आमे सबोले प्लानिंग प्रोसेस रे कोन जनरली वी गिव मोर एम्फासिस ऑन इनकम, वेल्थ, एई सब जिंस ऊपर आमे गुरुत्व दउ। तने एइडा को आमे इकोनॉमिक कंपोनेंट कथा आसे। किंतु जो सोशल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग, जोटा को सोशल जस्टिस बोली कहउतली, that is not given as importance as your economic components of the planning। And we have to ensure distributive justice। Distributive justice माने हमर जो inequality level, inequality among inequality of income, different sections of the society रो जो income level भितरे जो gap, बा हमर जो wealth, हम जो asset कथा कहउचे, income earning assets जो गुडा को अछि, that may be land, that may be your आमे गाई गोरु जोड़ा कहउचे डायरी प्रोडक्ट, आमे मेनली जोड़ा एनिमल हस्बेंड्री कथा कहउचे। तेणु का पाखरे हुए तो बहुत अच्छी, का पाखरे हुए तो कम अच्छी। तेणु एई टाइप रो जो इनकम जनरेटिंग एसेट्स, तार भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सही पारे सोसाइटी रे।
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ these are the social components of planning. ତେଣୁ ଆମକୁ both economic component and social component এই both ଉପରେ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି ମାନେ we need our income to grow and benefits of growth should also be equitably distributed. ତେଣୁ ଖାଲି ଇନକମ୍ ବଢିଗଲେ ହବନି ଇନକମ୍ ବଢିବା ସହିତ ଯୋଉ ବେନିଫିଟ ଅଫ ଗ୍ରୋଥ should reach all sections of the society. ଏଇଟା ହଉଛି social component of planning. এই ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଅଛି ତାପରେ ଏଇ ବ୍ଲକରେ ପ୍ଲାନିଂ ର ଯୋଉ ତିନିଟା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଇ ସରି ଆମର ଫର୍ମୁଲେସନ implementation and evaluation এই তিনটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টিভিটিজ ইন কেস অফ প্ল্যানিং ଆମର ପ୍ଲାନ୍ଟା ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ପ୍ଲାନ୍ଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ଲାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାନ୍ଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ତାର ଥାଏ ଚକ୍ ଆଉଟ୍ ୱି ମେକ୍ ଏ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦିସ୍ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଦିସ୍ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜଟା ଇଟ୍ କମ୍ସ ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତେଣୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହେବ ତେଣୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ମୁଲେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଦେନ୍ ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ କି ନାହିଁ whether we are on the right track or not ତା ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ମଝିରେ ମଝିରେ we need evaluation ତେଣୁ evaluation properly ହେଲେ ଯଦି ବି କିଛି we are committing some errors we can rectify so that there won't be any wastage of resources କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ we should give importance that resources are very much scarce and these scarce resources should be optimally utilized. ଯଦି ଆମେ ତାକୁ optimum utilization ନ ହେବ ତାହେଲେ any amount of wastage cannot be tolerated. We have millions of people with many wants and needs. They are suffering the different kinds of miseries of life. We have to uplift them. And we cannot afford wastage of resources. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସଟାକୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବାନି ତେଣୁ ଆମକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମକୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଠିକରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବି ସେତିକି ଦରକାର ମଝିରେ ମଝିରେ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ତାର ଦରକାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଦରକାର ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହିଁ ଏଇ ବ୍ଲକରେ ଅଛି ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ ପ୍ଲାନିଂ ର କଥା ଅଛି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ଲୋୟର ଲେବୁଲରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଭିଲେଜ ଲେବୁଲର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ वी आर मोर acquainted ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଗ୍ରାମ ସଭା ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହଉଛି ଦେ ମେକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମସ୍ ଦେ ନିଡ୍ ଦେ ଜଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ଅସ୍ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ଦେ ନିଡ୍ କାରଣ ଗୋଟେ କାରଣ ଏଭ୍ରି ସୋସାଇଟି ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ହୋମୋଜେନସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ସେମିତି ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ all the districts are not homogeneous groups. There may be differences among districts. As there are differences among different states, there may be differences among different districts also. One district may be more developed, another one may be less developed. गोटे जगह रे हुए तो बहुत डेवलपमेंट पोटेंशियल अछि किंतु प्रॉपर्ली यूटिलाइज हेई परनी मिनरल रिसोर्सेस डिपॉजिट्स अछि किंतु इंडस्ट्रीज आर नॉट देयर So differences among districts are bound to be there. Differences among blocks are to be there. Differences among villages are also to be there. Among the aspirations, the needs, the requirements of the people also vary. Gote village ro people ko jaha requirement, oda other village ro lok manakar se may not be exactly that is the requirement. And some people may prefer to develop in this way. And some people may think development in another way. Suppose किछि चाहउछन्ती एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर रे से माने डेवलप करिवे किछि लोक चाहउछन्ती दे नीड रूरल इंडस्ट्रीज टू बी सेट अप देयर some need को टाइप रो कम्युनिटी विलेज लेवल आमे कोन करू गोटे ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट फॉर्मेशन न कथा आसे किछि लोक किछि गां रे ताकर आवश्यकता थाई पारे हुए तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज केमती गोटे लॉन्ग टर्म बेसिस रे डेवलप करि हबो कि तमरो गोटे कोटी पोखरी खोलिबा कोटी रास्ता हबो नीड्स ऑफ द विलेज भेरी गोटे विलेज रो नीड आ गोटे विलेज रो नीड सहित समान न होई पारे इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तेणु एई क्षेत्र रे
जदि आम लोकल लेवल लोक आम लोकल लेवल को फ्रीडम दबा दे विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट दे नीड आम गोटे ब्रॉड आउटलाइन दे देले जे दिस इज वी नीड फॉर द होल नेशन दिस इज आवर टारगेट एंड एक्चुअली what specifically we are going to do that choice of activities एगुड़ा को जदि आम विलेज लेवल को छाड़ दबा so there will be a democratic approach to planning कारण डेमोक्रेसी कौन by the people of the people for the people आमर जो प्लानिंग आसुची ये प्लानिंग भी it is for the people आम प्लान we plan for the people of our country and it is should be by the people and it should be for the people of the people तेणु by the people केतेबेले हबो when a person at the lowest level suppose village level he or she gets an opportunity to decide to tell us what kind of development he needs so that is your grassroots level planning that is why हम पल्ली सभा बा ग्राम सभा एगुडा को ऊपर हम गुरुत्व दउचे तेणु एगुडा कर डिटेल्स एगुडा कर अछि आउ एई ब्लॉक रे I don't think that there is many complicated terms are there. बर्तमान ए ब्लॉक टा पढ़िले आ बुझिबा पई विशेष किछि असुविधा हबो नाही बोली मु भाबुची Now once again I welcome your comments suggestions whatever you want to complement supplement you are welcome I would like to listen from you. For 1 hour or so, I am going on talking. खाली मझिरे 2-3 मिनिट आम डिस्कशन कले आम जगदीश सांगरे कथा हेले सृष्टि सांगरे कथा हेले संदीप कथा हेले रश्मि कथा हेले एनी अदर आउ किए अछंती कोन किछि कहिया को चाहिबे जस्ट 1-2 मिनिट भितरे सिद्धार्थ सिद्धार्थ सुनी पड़छो मते नहीं चेतन Yes, sir. would you like to add something किछ ऐड करिवार अछि can it's a discussion only it's not a classroom No, sir. teaching खाली नहीं तमे किछ ऐड करिया को चाहिबो कि हमर डिस्कशन ने No, sir. अच्छा आमे जहा डिस्कशन करले बुझी हैला कि नै ना कोन असुविधा रहला ना सर बुझी हला बुझी हैला अच्छा जो क्वेश्चन न कथा हमें कहूचे आई डू नॉट हैव द क्वेश्चंस विथ मी ए जो पेपर रो क्वेश्चंस ओडा कारण मु फ्रॉम माय होम आई एम टेकिंग द क्लासेस द क्वेश्चन ओडा तमरो नियरेस्ट स्टडी सेंटर रे मिल जाई परिबो बा जदी इग्नो साइट रे कोटी अवेलेबल थिबो मिल जिवो पर्सनली मु कलेक्शन करी नाही ए क्वेश्चन ओडिको ई पेपर रो हला तेनो क्वेश्चंस मु शेयर करि परिबिनी मु केवल पॉसिबल प्रोबेबल क्वेश्चंस कथा कहि परिबी किंतु प्रीवियस ईयर मानकरे को टाइप रो क्वेश्चन पड़ी थिला सेटा एग्जैक्टली हमको प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन देखिले जणा पड़िबो तेणु सेही क्वेश्चन ओडा को तमरो नियरेस्ट स्टडी सेंटर रे मिल जाई परिबो बोली मु भाबुची मो पाखरे तार स्टॉक नाही थिले हुए तो मु शेयर करथांती किंतु मु ताको कलेक्शन करी नाही यार प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन ओडा सर हां सर यस को हां को सर एक्चुअली किछि जदी आपन को फील होची जोडा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन किछि रहूची मे बी हाँ हाँ से गुडा को तो मु बाय वर्ड जेमति कहले आज फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमिशंस गुटा आसी पारे कि तमरो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रो कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन कारण ई जो बॉडी गुडा का हम डिस्कशन करू जे धरो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रो कथा कहूचे कि हमें प्लानिंग कमिशन रो कथा कहूचे प्लानिंग कमिशन टा केमिति कॉन्स्टिट्यूशन है के तार मेंबर अछंती के तार चेयरमैन के डेप्यूटी चेयरमैन
तार मेन फंक्शन कौन इंपोर्टेंट फंक्शन कारण गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी बा नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जेतले रहउची विथ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इन माइंड दैट बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड तेणु तार गोटे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर अछि को टाइप रो सेटा के मेंबर रहिबे केते जण मेंबर रहिबे एवं से मेंबर मान से जो पर्टिकुलर बॉडीटार फंक्शन कौन रहिबो एक्जेक्ट फंक्शन कौन रहिबो एगुडा को डेफिनेटली क्वेश्चन ही आसीबो तेणु प्लानिंग कमिशन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऊपर आसी पारे बा हमरो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कथा आसी पारे आमे जो डिफरेंट सेंट्रल स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टेट स्कीम रो कथा कहले से ऊपर क्वेश्चन भी आसी पारे डिफरेंट स्कीम्स जो स्कीम्स गुड़ा को केमती आसुची ना कॉन्स्टिट्यूशन ने हमरो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एमती भाग होईची सब्जेक्ट सेही लिस्ट रे थिबा सब्जेक्ट ऊपर एनी डेवलपमेंटल प्लान पॉलिसी सेही पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज कॉम्पिटेंट एनफ टू टेक धरो यूनियन लिस्ट रे गोटे सब्जेक्ट अछि सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉम्पिटेंट एनफ टू मेक एनी लॉ टू मेक एनी प्लान और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान सेटा तार दायित्व सेमती कॉन्करेंट लिस्ट रे अछि बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू इट जेटा रेसिडुअल लिस्ट बोली कहउछि स्टेट लिस्ट रे अछि ताले स्टेट लिस्ट रे कोन हो जोटा स्टेट गवर्नमेंट ता पई सेही सब्जेक्ट गुडा कर एनी लॉ दरकार स्टेट गवर्नमेंट इज कॉम्पिटेंट एनफ टू मेक एनी लॉ और स्टेट गवर्नमेंट विल प्रिपेयर ए प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दोज थिंग्स जोटा स्टेट गवर्नमेंट रो रेस्पोंसिबिलिटी तेणु एगुडा आसी पारे हमरो डिफरेंट डेवलपमेंट स्कीम्स एमती क्वेश्चंस आसी पारे तो आमे देखिबा सेंट्रल स्कीम रे कहार जो प्लान फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन कहार दायित्व कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रे केते दायित्व तेणु टोटल सेंट्रल प्लान असिस्टेंस कोइला माने हमर आसीबो कोन टोटल सेंट्रल प्लान केते आउ तार शेयर टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कारण सेंट्रल गवर्नमेंट रो खर्चटा आइदर आसुची कोन कंप्लीटली तमरो सेंट्रल स्कीम प्लस जोडा को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तार शेयर सपोज आमर 1000 कोटी टंकार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है टोटल कंट्री इंडिया रे ता भितर 50% शेयर होची सेंट्रल गवर्नमेंट रो तेणु 500 करोड़ सपोज तेणु ये 500 करोड़ प्लस जोड़ा को कंप्लीट तमरो सेंट्रल स्कीम अछि तेणु टोटल टा तार सेंट्रल गवर्नमेंट रो प्लान क्वांटम ऑफ प्लान सीटा हबो जोड़ा स्टेट गवर्नमेंट रो समिति स्टेट प्लान प्लस तमरो स्टेट गवर्नमेंट रो शेयर जोटा तेणु एई टाइप रो क्वेश्चंस हमें तले पढिबा आमे डेफिनेटली एक्सपेक्ट करी कि आखि आगे रखी कि से क्वेश्चन गुडा को हम के ब्लॉक गुडा को प्रिपेयर करिया को ही पड़ियो ओके सर तेणु डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग आसिले तार आसीबो केमिति मेकानिज्म कोन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी केमिति कॉन्स्टिट्यूट हेची तार काम कोन सेमिति आमे गुटे विलेज लेवल को जीवा पुलिस सभा ग्राम सभा र कथा आसीबो आजकल तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एकदम मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हे गलानी तांको थ्रो रे भी बहुत गुडा प्लान इम्प्लीमेंटेशन होउची तेणु सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत समय क्वेश्चन आसे कि ए ब्लॉक रे पर्यंत आम सेल्फ हेल्प ग्रुप रो कथा आसीनी आम स्टेट लेवल प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग ब्लॉक लेवल प्लानिंग विलेज लेवल प्लानिंग एगुडा सब रही तेणु से प्लानिंग गुड़ाक आम देखा जे एक्चुअली गोटे बढ़िया इंटरेस्टिंग जिनस आज मुझे ओमिट करी कहवाक चांस पाइलिनी गोटे पेज रे अच्छी मुझे देखियो बोली कि माने वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बोले 78 पेज रे अच्छी राइट 78 पेज रे अच्छी जेटा देखियो जाय कि ब्लॉक रे केमिति तमरो प्लानिंग इज डन एट द टॉप एंड इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस आर पास्ड ऑन टू द लोअर लेवल्स हैला तेणु से गोटे रेक्टांगुलर के देछि रेक्टांगल गोटे देछि त्रिभुजटे देछि ता तळुक आ गोटे त्रिभुज सेंटर ता तळुक आ गोटे त्रिभुज दला स्टेट ता तळुक आ गोटे त्रिभुजटे देछि ट्रायंगल टा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एमिति विलेज लेवल पर्यंत आसुछि एटा होछि कोन टॉप रु बॉटम प्लानिंग फ्रॉम टॉप and resources and information are passed on to the bottom किंतु वर्तमान जो कथा हमर आसुची जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टा सेटा कोन करछि एमति तळुक तळ न करिकि तार राइट को देछि एटी सेंट्रल गवर्नमेंट ता साइड को स्टेट गवर्नमेंट ता साइड को डिस्ट्रिक्ट ता साइड को ब्लॉक लेवल ता साइड को विलेज लेवल एटी कोन होछि सेंटर कोन करछि ता रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन से सिंपली ट्रांसफर करछि स्टेट लेवल स्टेट ट्रांसफर करछि डिस्ट्रिक्ट लेवल को डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करछि ब्लॉक लेवल को ब्लॉक ट्रांसफर करछि तोर विलेज लेवल को ता रिसोर्सेस दबो इंफॉर्मेशन दबो किंतु एक्चुअल प्लानिंग टा एक्चुअल डिसीजन व्हाट यू आर गोइंग टू डू विथ दैट मनी दैट चॉइस इज मेड एट द ग्रासरूट लेवल बाय एट द लोएस्ट लेवल जोटा कि विलेज लेवल तेणु यहीटा को बढ़िया देखियो केमती एग्जाम रे टाइप रो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग रो कथा आसुची जदी एमती हम क्वेश्चन किछि अटेम्प्ट करूचे ए टाइप रो डायग्राम दे कि लेखले आउट के बेसी सेटा गोटे आई कैचिंग हबो बोर मार्क फेचिंग हबो से आंसर टा
ତେଣୁ ଯୋଉ wherever possible ଏଇ type ର ଗୋଟେ suggestive diagrams ରହୁଛି, we can make use of that diagrams while writing answers. ହେଲା, so that ଆମେ ଯିଏ ଖାତା ଦେଖିବେ ଯେ examiner, he will have a feeling that that particular learner has gone through the book. Anything else? So can we conclude now? If you don't have anything to add, should I conclude here?